Hi, this is Vaishali Chandra for alphaworld.com and we have with us the stellar star cast of the film Mard Ko दर्द नहीं होता. Okay, so Go ahead, all Yundra. you have to do is you have to pick a chit, act it out, and you guys have to guess. Yeah, sure. Okay, and then you have to answer a question that I'll ask based on that. Okay, your turn. Now I'll have to be very careful. चीटर बैठा है आपके साथ. हाँ रिफ्लेक्ट थोड़ा इधर रिफ्लेक्शन पे नहीं आ रहा वो. चलो रेडी हाँ आई एम नॉट गोइंग टू से दिस मैं बोलूंगी नहीं नाम मेरे को पता है कौन काजल. अरे अपनी काजल है ये तो. You were the first one to guess it. हाँ तो मैंने कुछ बोला हाँ तो मैंने कुछ बोला मैंने गुड नाइस Okay, so tell me, working with her. It was a great experience. There was so much to learn. Such an experienced actor. 2.5 years of television. 1.5. 1.5. Sorry, 1.5 years. 1.5 years of television and just so much energy on set. This is how she is on the sets as well. No, on the set we were. Everyone was in their characters throughout. So we were very quiet. But she had bursts of energy where she had to become herself in between. तो ये सब आ जाता था कभी. Makeup, hair. अरे you are in the muck. What makeup and hair? But it was a fantastic experience because she pushed me to deliver my best, Right. you know, and pushed me in terms of physicality, in terms of acting, prowess, and I learned a lot. So it was, yeah. And did you guys ended up like hitting while the action was going on or something? Accidentally. They ended up Yes, racing yes, each yes. other. There was. I remember a time when you were racing each other. And something then there were happened. two scenes. Yeah, Yeah, there were two scenes. Oh yeah. I would like to know in detail Yeah. a bit. Oh okay. So that incident we can share. Okay. So there so, was. Okay, so I'm very competitive. Okay. I am. So. And I was an athlete in school. Okay. So I And was a runner. I didn't know that. Okay. So there's a scene where I am riding a scooty and he's running स्कूटी with नहीं me. थी वो. स्कूटी थी. Vespa थी. Vespa. हाँ Vespa है यार और मैं पहली बार कर रही थी ठीक है मैंने So they कभी were चलाई taking a नहीं. shot from the other side of the warehouse, and the whole length of the warehouse was about 120 meters, right? Maybe something like that. So we had to start from one point, and we had to stop at another point because there's a wall. So there Okay, were three takes. okay, Now I'll this is explain. getting I'll more explain. interesting. I'll explain. I'll So tell. she I'll starts tell. buzzing, and because I'm an athlete, obviously it takes time to catch speed in a Vespa. Right. I नहीं पहले मैं बताऊंगी. So हम I nailed it. पहले मतलब we were doing it अच्छे से. ये So I was catching के up. साथ आ जाएगा अभी. मैं बताऊंगी. ये अब मैं हार्दिक बताऊंगी. के excuses के साथ आ नहीं, जाएगा. excuse You can me, now excuse me, मैं देख- बताती अब हूँ. देख I'm लेना. let's see. Okay. She's my best friend, yeah, but she's my best friend. Okay. So हुआ ये कि तो मैं पहली ये बार अभी तक जितना बोला वो सही था. हाँ मैं बता इसके रही हूँ. आगे भी सही अब इसके बोलने आगे वाला मैं था. बताऊंगी. तू इसके बहुत आगे- बोरिंग तरीके से बता. एक इमोशनल स्टोरी होता है, एक सोच तीसरा पर्सपेक्टिव भी सुन लो बात. बात ठीक है मैं पहली बार वेस्पा चला रही हूँ ठीक है हाँ. तो मैं आराम से चला रही थी मनु तेज कर रहा था तो सेकंड टेक हुई सेकंड टेक में मैंने भी चला दिया द कैमरामैन केम अप टू अस एंड उन्होंने बोला कि आई एम नॉट एबल टू कैप्चर यू गाइस क्योंकि तुम लोग बहुत तेज चला रहे हो तो धीरे चलो बहुत तेज भाग रहा हूँ भाग और रहे हो? बहुत तेज चला रहे हैं. I- Twice धीरे चलो. I धीरे चलो. in the sense I lost. लेट मी टेल द स्टोरी अब अच्छा, मनु okay. तो फिर उसके मैंने उसने बोला कि धीरे चलो मैंने बोला फाइन और मनु मेरे साथ था मैंने बोला अभी मनु वो कैप्चर नहीं कर पा रहे धीरे चलना धीरे हाँ. ओके बोला ओके धीरे बोला से चलना है धीरे से भागना है हाँ. मैंने बोला धीरे जाना है कहते ओके ठीक है ऐसे ही मैंने बोला ठीक है मैं अपना घर ही ये मेरे साइड पे था मैं चला रही हूँ भागने लग गया
मुझे गुस्सा आया कि मतलब व्हाट इज दिस, कि क्या मतलब मैंने भी तेज कर दी और तेज भागने लग गया। मैंने बोला जस्ट स्क्रू हिम, और मैंने पूरी फुल ऑन चला दी। और मेरे को ऐसे था कि मतलब क्या दिखाना क्या चाहता है कि मैं स्कूटी में भी तेरे को ओवरटेक नहीं कर सकता, तो क्या मतलब है। तो मेरी थोड़ी ईगो और वो ऐसी कंपेटिटिवनेस आ गई बीच में, सामने वॉल थी और मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि मुझे पता था कि मैं क्रैश करने वाली हूँ। तो मैं साइड पे रोकने की कोशिश करी बट मैं नहीं हुई। सो मुझे लेट गो करके गिरना ही था वरना मैं फूटती। तो मैंने रोकने की कोशिश करी उसी में, क्योंकि स्पीड इतनी तेज थी, आई कुडंट फाइंड द ग्राउंड एंड ऐसे करके सो आई फेल डाउन एंड वेस्पा सीधा वॉल पे जाके टकरा गई ऐसे एकदम। और मेरे ऊपर जो गिरी वेस्पा, अब मैं पहले गिर गई, तेरे को वेस्पा की टेंशन है। मैं अब ये भागते अब मैं बोलूं, हाँ अब एनीवेज तो मेरे को बहुत लगी और मेरा बहुत खून निकला एनीवेज। अब बता। Okay, now your बाह में मोच आ गई थी तुम्हारी। हाँ मेरे इधर चिल्ला भी था, किसी ने वो So देखा basically- हाँ बिल्कुल देखा। I was racing ahead every time and she got very infuriated that me running was faster than her on a Vespa. So third time she really tried to. So that was the third shot. Yeah, so Yeah. all 3 times I raced ahead. So third time she I told fell him down कि money is not able to and capture. she left the Vespa. The thing is because I was ahead and I know there's a wall, so I stopped running Huh. and the Vespa hits me from behind. Suddenly there's a Vespa coming in Right. and she's not on the Vespa. That happened just once or twice. Once after that the उसके Vespa बाद- was gone. And I was on the floor. The Vespa. इन दोनों की ये वन अपमैनशिप के बीच में शॉट नहीं मिला। है और बहुत बाद में superb है। ठीक है है ये और सब हुआ बहुत superb। और Now the third perspective. मैं सटक गई थी बिकॉज ये गिर गई, मोच आ गया, शूटिंग बाकी है, हाँ. तो आई वाज अ लिटिल मैड। And that was like day or the night. Oh, last. It was the last. हाँ. बिकॉज ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि शूटिंग मतलब गहरी चोट आ गई तो शूटिंग रुक जाएगी, देन वी वोंट बी एबल टू। सो वो सब सोच के मैं थोड़ा मतलब गर्म हो गया था। मैं आई माइट हैव सेड 1 or 2 थिंग्स इन रेज। Next पे जाते Okay. And she was like, अभी ये पूछेगी what was it? Actually, what was it? आई थिंक अभी ये एक्सपीरियंस हो गया तो आगे ये फिल्म में काम करेंगे तो ऐसे स्टूपिड थिंग्स नहीं करेंगे। नहीं मैं नहीं करूँगी। बस यही था, बाकी सब बहुत स्मार्ट थे, ये एक स्टूपिडिटी था। नहीं मेरे दिन में वो है हो गया वो वो, कैसे कंपेटिटिवनेस और वो चीज़ है। But then this is something that you'll remember. हाँ हाँ You'll cherish it डेफिनेटली चेरिश तो and not repeat it also. not repeat it was a You learning shouldn't repeat it. You experience. know why? Let me just tell you. I'm not dinging you all. It's unprofessional. It is actually unprofessional क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा गिर जाती है उसके बाद बेटा gave the shot Something happens then वो it's a loss. वो day loss होएगा, इतने सारे लोग हैं। It is something which is very Agreed. हाँ क्या कर रहे हो Next. क्या करा तूने कुछ नहीं किया मैंने। कंजर। हाँ अभी देख लिया उसने। क्या है तो थोड़ा ये थोड़ा टफ है, ठीक है। सो घर छत पर्वत, ये कैसे पर्वत है शिव, ओले बारिश, बारिश स्नो, तांडव, बारिश शिव जी, गिरती शिवाय। बारिश ओम नमः गिरी थी शिवाय। पर्वत बारिश गिरी थी पर्वत No. पिक्चर का नाम है क्या? केदारनाथ केदारनाथ, सुशांत। सारा ओ सारा अली, हाँ। अच्छा अच्छा Oh, वो that was not right. सारा अली। I watched you. Ooh. Okay, so Sarah, the new actress Yep. on the block. Have you watched her film? yeah, I've seen both her films and I think she's extremely confident about her craft and coming in with so much confidence, you know she's going to go a long way. Absolutely. Yeah, of course I've interacted with her. Screening baby and we did an interview together. Right. So both she's very chill and lovely energy and I told her ki bro you have some amazing screen presence whenever she's on screen, like you cannot take your eyes off her and that's something that is really really nice I feel, and amazing person, great energy and I gel pretty well with her, so yeah. And A fake Twitter account of Sara Ali Khan follows me on Twitter. Oh wow. Even me. That's all. that's all. Okay, I next. felt cheaply cool. Cheaply. ये नहीं हुआ क्या तीसरा बार? By the way, I have not guessed even one. You guessed Kajal. हाँ. Kajal. लेकिन वो इसका चेहरा देख के मैंने गेस किया।
चल ऋतिक रोशन This was the easiest one. ये तो मतलब Do you a Hrithik fan or do you continue to be a Hrithik fan? I was a ऋतिक फैन मेरे उधर अलमारी में ऐसे पोस्टर था ऋतिक अब रोशन क्या का हुआ? ऐसे करते थे जब वो नया आए थे कौन होना प्यार है He was wearing a black knitted something. Yes. I remember The that. sexy I think he was wearing a do-rag. वो गाने से ही है that's हाँ, from it's that from गाना. the song only. एक पल का बहुत अच्छा पोस्टर था मतलब वो अभी तक मतलब मेरे ऐसे अभी तक तो नहीं है बट तब था एंड द ओनली एक्टर जिसका मैंने आई पोस्टर थिंक लगाया वो लास्ट है जिसने पोस्टर बेचे थे नहीं हाँ. उसके जो पोस्टर आए थे Yeah, उसके बाद yeah. जमाना चेंज हो उसके गया बाद जमाना गया Yeah, हाँ, true. हाँ. So do you even have those kind of memories, you know, watching Hrithik dance and he was a rage in the country? Absolutely, Roshan. I think one of the biggest debuts in the history of Bollywood when it comes to numbers. Probably the biggest. The biggest debut when it comes to numbers. I think सबका क्रश रहा होगा Yeah. वो आई थिंक जमाने आयुष्मान खुराना बट देन या A return on investment, yeah, Ayushmann Khurrana, but when it comes to gross, चलो बिजनेस छोड़े हम वो छोड़ो, impact wise, yes, him coming into the industry changed the industry a lot because no one as prepared as him came before that. पागल हो गए थे public. He was I mean he still is fantastic at dance. His body, his acting powers, you know how prepared he came. Exactly. That kind of changed the benchmark of actors coming in then on. Then you knew that you have to know everything when you come. There's no Exactly. one's forgiven. No one's given second chance after Hrithik, I think. And I've closely interacted with some people that work with him on a daily basis, and I've heard stories about him. And I believe he's one of the most hard-working people that are out there. He's constantly at it, and the kind of things that he's overcome, I know for a fact because I've faced a lot of things that he's faced, and I know how tough it is to overcome. It's fantastic. It's quite an inspiration, and I keep reminding myself that if he's done it in his process, then I can do it. Oh, that was a good one. Hi, my name is Gulshan Devaya Hi, this is Radhika Madan. Hi, I'm Abhimanyu. and you guys are watching us on alphaworld.com. Yeah, if you like this video, then please like, share, and subscribe. Even if you don't like this video, please like and अब share भी करना है यार. do it because we know karate will break your bones. और 21 March, 21st March is मर्द को दर्द नहीं होता. Please go in theaters and enjoy the film because you're gonna love it. 21st March 2019 from now to eternity.